Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 7th of August 2023. From today's newspaper, we would be covering these topics. The number one is about the stem. So here we are not talking about the stem cells of the biology. This is a short form for your science, technology, engineering, mathematics, right? Then we'll be talking about the defamation case against the Rahul Gandhi. And the last topic would be about India's sugar surplus. Let us begin with our first topic. It says about the STEM, that is the science, technology, engineering, and mathematics. So the writer is saying that the STEM, whose full form is the science, the technology, the engineering, and mathematics, it is the foundation for innovation, progress, and societal advancement. How? See, if we talk about approaching in the new era, okay, if you see the world now, there are many technologies which are emerging. For example, you're having the artificial intelligence, you're having the robotics, you're having the biotechnology, एंड चैट जीपीटी बहुत ही ज्यादा जोर शोर से चल ही रहा है आपके पास ठीक है so with respect to this new era with respect to these new technologies it is very critical it is very important that we provide the coming generation with the information regarding the science regarding the engineering techniques and the mathematics all right and it would be very easy to provide them the information when we cultivate among them the the power of the skills like the power of thinking when they try to think when they have mindset of curiosity so that's how they would be easy to inculcate the information on the coming generation right so we can say that yes it is a foundation for the innovation for the progress and for the societal development. If we talk about the data, India accounts for 31.7% of total STEM graduates worldwide, and it is one of the largest STEM jobs marketplaces in the world. And यही नहीं आप यहाँ पे देखिए that it is India is the third largest unicorn center and it is steadily climbing in the global innovation index. To all the UPSC, serious UPSC aspirants, I would like you all to write down in the comment section that who releases this Global Innovation Index. This is a favorite question of the UPSC, like who releases the Business Development Index, the Global Innovation Index, the UNDP, which the post is released by the UNDP, right? So this is about your homework. So coming back to the National Science Foundation, so this published a report, and as per the report, okay. So before we go to the National Science Foundation, I would like to mention one more thing over here that the STEM jobs are divided in India. I mean, they are not equally. There you will find the differentiation in the villages as well in the marginalized sections. You can take the very good examples of the IITs, Indian Institute of Technologies. You will find the top engineering colleges, that is the IITs, or IITs in the metro cities or in the good cities. But the rural areas where the most of the engineering colleges are there, they do not have the proper resources. They are very under resourced. It is just for the namesake that it is an engineering college, but you will not find the resources over there. And look at the data of the IITs itself, the women ratio. The ratio of the women is very less
And the participants in these institutions or the students are mostly the male students or the boys, who could say. And if you're saying this, the girls who are less in these colleges, among these girls, only 50% women just go to the workforce and rest just drop it out. Or they just get married, they have the children, they look after the home, they look after the responsibilities, but they do not participate in the workforce. So, as per a report of the National Science Foundation, 80% jobs in the future, in the coming decade, would be created in such a manner that those jobs will require certain skills related to the mathematics, related to the science. However, these the essence of the engineering or the science knowledge is very limited in India. There is a gap in the STEM education, as we had already discussed that. Further, 2 out of 3 girls who study in the STEM do not enter the workforce. For example, अगर कोई engineering college है, उसके अंदर आप IIT ही ले लीजिए या फिर कोई भी engineering college ले लीजिए, हम बोल रहे हैं कि उसमें सबसे पहले तो women का participation कम है. आप रेशियो ऐसा मान लीजिए 2-3 लड़कियां होंगी तो कम से कम 50-100 जो होंगे आपके पास लड़के होंगे वहां पे. और ये जो 2-3 लड़कियां यानी कि ये जो बहुत कम नंबर है, इसमें भी 50% लड़कियां यानी कि 50% जो women है, they get married to, just they are having children and they are looking for the responsibilities of the house. They are house homemakers, but they are not participating in the workforce. And as we mentioned that 60% of the institutions are in the rural areas and are under resourced. Now, after the school programs, additional learning opportunities outside of the usual classroom setting and allow them to explore the STEM subjects. So, to inculcate this STEM mindset in the persons or the students, it has been after school programs we can organize where it gives you immense opportunity to learn certain skills. It's like a usual casual classroom where you are, learning out of your normal traditional school structure. It will give access to the technology, the equipment, the resources, and most importantly, it will target those unreached sections of the society, like the rural sections or the women person. So, in this, how we can try to inculcate the skills, the thinking approach, right, in the students. Now, coming to the second topic, it talks about the defamation case against the Rahul Gandhi. Rahul Gandhi ने अपने 2019 जो पहले वाले जो चुनाव है उसके प्रोपेगेंडा उसका जो प्रचार है उसको करते हुए उन्होंने बोल दिया था कि सारे चोर या सरनेम जो है वो मोदी ही क्यों होता है. तो इस सेंटेंस पे उनके ऊपर डेफेमेशन केस लग गया था और उनको हाईएस्ट पनिशमेंट दिया गया था जो कि इस केस के अंदर होता है. और उस केस के बाद उस पनिशमेंट के बाद ऑब्वियसली उनको डिस्क्वालीफाई होना था एज अ एमपी ऑफ द पार्लियामेंट. तो ही अपील टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट उनको रिहाई दे दी गई है. ही रीस्टोर्ड हिज मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा. तो जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की which was headed by Justice B.R. Gawai has noted the absence of the substantive reason for the trial court awarding Mr. Gandhi a 2-year prison term, the maximum sentence for the criminal defamation. What is defamation? अब इस defamation केस को समझते हैं कि उनके ऊपर चार्ज लगाया गया defamation का. The Rahul Gandhi was given the highest punishment under defamation, and ultimately the Supreme Court has, restored his membership in the Lok Sabha. So let's understand what is this defamation case. So it is act of communicating the false statement about a person. For example, if someone is saying about me in a false manner, and if it is against my, the reputation, and if you're hurting my reputation, then it would be a case of a defamation. That means it is the act of communication, the false statement. Either you're doing it orally or in a written manner that ensures the reputation of that person who observe through the eyes of an ordinary man, right? अगर किसी इंसान ने किसी सेकंड इंसान के बारे में कुछ ऐसा बोला है जो किसकी रेपुटेशन को खराब कर रहा है ऑर्डिनरी मैन के चलते हुए ऑर्डिनरी मैन की नजर में, so that is your defamation. All right. So any false or unprivileged statement published or spoken deliberately, intentionally, knowingly, with the intention to damage
someone's reputation is your destiny. Okay, now just give me a 1 minute. Defamation law in India. Article 19 grants the freedom of speech to its citizens. अब लॉ को समझते हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, it talks about the fundamental rights, and the objective of this fundamental right was to prevent the citizens from the arbitrary actions of the government. All right. So in this fundamental rights, which could be issued against the state or against the government, the one more thing is these fundamental rights are not absolute. That means there are certain conditions where you can put the reasonable restrictions on these fundamental rights. So this is how we say that the fundamental rights are not absolute. So in the same manner, look at the Article 19, which grants the freedom of speech to its citizens. It says that every citizen of India has a freedom of speech and expression, but at the same time, Article 19 subclause, Article 19 clause 2 says that it has a reasonable restrictions as well, like in the case of contempt of court, in the case of defamation, in case of incitement to an offense. In India, it could the defamation could be the civil as well and the criminal as well. It's very easy. The civil means a wrong being readdressed with a monetary compensation, while the criminal law seeks to punish the wrongdoer and send a message to others not to commit such act with a jail term. बट ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है देखिएगा. इंडिया की लॉ में ये कहाँ लिखा हुआ है देखिए. अगर किसी इंसान को डेफिमेशन के केस के अंदर पकड़ा जाता है और इफ द पर्सन इज कल्प्रिट एज अ डेफेम और डिफेम, तो उसको क्या सजा मिलती है या फिर क्या उनको जेल में डाला जा सकता है, किस तरह आप उसको कन्विक्ट कर सकते हो. So the conviction may disqualify an MP if the offence for which he is convicted is listed in the section 8 clause 1 of the Representation of People Act of 1951. ठीक है. अगर आप रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ इन सबको लेके भी कर रहे हो तो भी आपको कन्विक्शन जो हो सकता है. इन शॉर्ट, यहाँ पे राहुल गांधी जी के बारे में क्या हो गया था कि पार्लियामेंट जो है उसका अगर आपको मेंबर होना है तो पार्लियामेंट के मेंबर से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा होती है. तो डिफेमेशन केस के अंदर राहुल गांधी जी को जानबूझ के ये जबकि इतना बड़ा क्राइम भी नहीं था कि इनको हाईएस्ट जो पनिशमेंट है वो दे दी जाए, लेकिन इनको एग्जैक्टली 2 years का पनिशमेंट दे दिया गया था जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई के इंस्ट्रक्शंस मिले थे पार्लियामेंट से. So this was, it is said that intentionally done by the government. Okay. Now, if India's sugar surplus leading to a crisis, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमेशा जब हम पढ़ते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ब्राजील इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर, लेकिन इस बार क्या हुआ कि भाई इंडिया ने ब्राजील को पीछे छोड़ा और इंडिया टॉप प्रोड्यूसर बन गई शुगर की. लेकिन फिर भी हमारे लिए बुरी बात क्यों है, क्राइसिस का क्यों बोल रहे हैं लोग कि फ्यूचर में क्राइसिस आने वाला है. India became the world's top sugar producer in 2021 to 22, surpassing the Brazil with a record of 359 lakh tons. But ये जो हम एक्सटेंसिव यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का शुगर को प्रोड्यूस करने में, वो रिसोर्सेज बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं जिसकी वजह से फ्यूचर के अंदर आपको एक पोटेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेगा. आई रीएटरेट माय पॉइंट. व्हाट आई एम सेइंग कि आप शुगर प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ा तो रहे हो, बट इस शुगर प्रोडक्शन को बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे ग्रो करने के लिए जो रिसोर्सेज आपके पास है वो बहुत ही तेजी से कम हो रहे हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में क्राइसिस आने वाला है. तो ओवर कल्टिवेशन ऑफ द शुगर
has caused a sugar surplus and high export, जिसकी वजह से देखो आप शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो तो आप इंडिया को तो उसकी नीड दे रहे हो, पर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप बहुत ज्यादा उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, तो इंडिया का जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है इसकी वजह से। एग्रीकल्चरल लेवल पे आपको कोलैप्स देखने को लिए मिल रहा है, तो दिस इज अ रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर। बट इतना ज्यादा एक्सेस शुगर प्रोडक्शन कर क्यों रहे हैं? इंडिया क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द शुगर। अभी देखो प्रोड्यूसर कंज्यूमर में फर्क होता है। प्रोड्यूसर यानी कि हम खेती ज्यादा कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं। कंज्यूमर मतलब हम खुद उसको खा रहे हैं ज्यादा, एंड जस्ट हैव टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट इस ह्यूज डोमेस्टिक डिमांड। तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो उसका जो शुगर का जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के हमको जो है उसका प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। उसके साथ अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो डबल हो जाती है नीड। But the excess production stems from the policies and measures that makes farmers favor sugarcane cultivation. अब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेयर, और आप हमेशा ध्यान रखिए एमएसपी जब आप बात करते हो प्राइसेस के लिए वो क्रॉप्स के लिए होता है, बट एमएसपी की जैसे ही शुगर के लिए हम बात करते हैं एफआरपी की, दैट इज द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस which mandates a minimum price that sugar mills have to pay to sugar cane farmers, ensuring that farmers always get a fair profit for their crops. अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तरफ आप एफआरपी दे रहे हो, फिर सरकार सब्सिडी भी देती है। ओके, गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडीज, प्लस व्हाई द सब्सिडीज इज गिवन, इट कुड बी अ पॉलिटिकल एंगल भी आप देख सकते हो, टू गेन द वोट्स फॉर द फ्रॉम द फार्मर्स। अल्टीमेटली क्या होता है, आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, जब आपके पास सब्सिडी है तो आप प्राइस के अंदर खेल सकते हो और आपका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकता है। जबकि ब्राजील जैसी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, टिटमाला, उन्होंने डब्ल्यूटीओ के अंदर कंप्लेंट भी फाइल की है कि इंडिया को ये जो इंटरनेशनल ट्रेड रूल है वो वायलेट कर रहा है, वो इस तरह से सब्सिडी नहीं दे सकता है शुगर मार्केट के अंदर। What efforts have been made to address this issue? अब इस इशू को एड्रेस करने के लिए क्या एफर्ट्स किए गए? इंडिया की जो सरकार है उन्होंने इसको डाइवर्ट किया है एथेनॉल की तरफ, बिकॉज एथेनॉल जो है उसके रिक्वायरमेंट में आपको शुगर के मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। एक बहुत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है अल्कोहल बेवरेजेस के अंदर। प्लस जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें आप एथेनॉल जो ब्लेंडिंग है वो आप कर सकते हो, अल्टीमेटली जो पोल्यूशन है वो भी कम होने वाला है। क्रूड ऑयल जो है उसके ऊपर जो आपकी इंपोर्ट के लिए जो डिपेंडेंसी है वो भी कम होने वाली है, करेक्ट। एंड जीएसटी जो है एथेनॉल का वो भी कम कर दिया गया, 18 से 5% कर दिया गया। तो दीज आर सर्टेन स्टेप्स जो कि सरकार ले रही है। इंडिया का ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है ये अल्टीमेटली आपका जो इंपोर्ट है उसको कम करेगा, शुगर एक्सपोर्ट को कम करेगा, ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम करेगा। तो दीज आर द सर्टेन इनिशिएटिव्स व्हिच आर वेरी हेल्पफुल। तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। देखो ये जो कुछ द हिंदू में कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब रिपीटेड आपको न्यूज़पेपर्स जो है वो भी लिखे एडिटोरियल्स। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू किसी भी एडिटोरियल का बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, ताकि जब रिपीटेड एडिटोरियल्स आते हैं तो आप इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। Just give a 5-10 minutes reading and you can utilize that time in the static portion of the UPSC. Alright? So I hope this is clear. Please do subscribe our channel at the rate IS Cafe and like and share. Thank you so much.